Hello, good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of history for BG third semester. This is multidisciplinary course. This paper is framed by Dr. Samir. And before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have many questions that is short as well as long answer type questions. We will discuss first short answer type questions. We have paper of history, MD course, third sem, Dr. Samir. So we have long as well as short answer type questions. First we will discuss short answer type questions. In short answer type questions, first question is civil disobedience movement. Civil disobedience movement. शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट. The third question is doctrine of lapse. Fourth question will be safety value theory. Then the fifth question, the short question, that is fifth question will be Red Cliff Mission. And last question is self-government. Government 909 Act. Okay. Another question. So these are short answer type questions. Coming to long answer type questions, we have first question is Plagsy and Bexar जो battle है. क्वेश्चन ऐसे होगा. क्वेश्चन नंबर 1, explain how the battles, how the Plagsy and Bexar battles help us or help the Britishers to strengthen hold on India. Explain. ये जो दो बैटल्स है, ब्रिटिशर्स को कैसे फायदा मिल गया स्ट्रेंथ हिंदुस्तान पे, या हिंदुस्तान पे कैसे उन्होंने विथस्टैंड किया, उस पर काबू कैसे किया, ज्यादा स्ट्रांगली कैसे हेल्ड किया भारत को. ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है. कौन कौन सी जो बैटल्स है, एक सो प्लेक्सी एंड दूसरा है बैक्सर बैटल. सो कैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कैसे काबू जमाया इन बैटल्स की वजह से. दूसरा जो है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857. main causes of explain main causes of revolt 1857. कौन से मेन कॉजेज है, मेन वजूहात क्या है जो रिवोल्ट हो गया 1857. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन विल बी third question is what are the main differences between extremists and moderates. Moderates और extremists के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव फोर्थ क्वेश्चन what are the importance of non-cooperation and civil disobedience movements in Indian National Conference. What is the importance of non-cooperation and civil disobedience movement
Dennis movement in Indian National Congress. Indian National Congress. Okay. Fifth question. Explain or define Mountbatten प्लान. उसका क्या प्लान था? ठीक है, ठीक है. Then we have sixth question. Sixth question is explain foundation of Muslim League. Okay. Then last question is write notes on Government of India एक्ट्स. कौन कौन सा एक्ट? 1919 एंड 1935. ठीक है, इस पे नोट लिखना है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन हिस्ट्री फॉर एमडी कोर्स. होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.